Hello everyone, this is Aditya verma. I welcome you all to Eclipse classes. As we are studying about digestion and absorption, we have already discussed about mouth, pharynx, esophagus and stomach. And in last lecture, we saw that stomach is opening into duodenum, and this duodenum is a part of small intestine. So in this lecture, we will study about small intestine. Small intestine, okay? This structure, which is green in color, this is a small intestine, okay? A small intestine is a long tube organ that connect stomach and large intestine, okay? This is the small intestine, and we can see in the diagram clearly it is connected with stomach and large intestine, okay? It is ectodermal in origin. Clear? It is the longest part of alimentary canal present in the abdominal cavity, okay? And it is about 5 meters in length. Now we will see the wall of small intestine, okay? This is the small intestine. We will see this structure, okay? The wall of small intestine is made of 4 layers. First one is serosa, second one is muscularis, and this is also known as muscular layer. Third one is submucosa, and fourth one is mucosa, which is innermost layer, okay? So first serosa, outermost layer made up of peritoneum. As we can see in the diagram, serosa is the outermost layer. पेरिटोनियम से मिलके बना हुआ है. पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम इज द सीरस मेम्ब्रेन विच फॉर्म लाइनिंग इन एब्डोमिनल कैविटी, ओके? देन आफ्टर दैट दिस इज द सेकेंड वन, मस्कुलरिस. इट इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर अरेंज इन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर. If you will see the diagram, outer longitudinal and inner circular layer, and the combination of both these are muscularis. Then inner to muscularis, submucosa layer is present, okay? This layer is submucosa. It is formed of loose connective tissue and containing nerves, blood and lymph vessels, okay? And here is an important point about submucosa. Submucosa of duodenum contains duodenal or Werner's gland, okay? It means the duodenum region of the small intestine contain gland that is known as duodenal or Werner's gland. Now the fourth one is the mucosa, innermost layer. This is the innermost layer made of brush bordered simple columnar epithelium. What is brush bordered simple columnar epithelium? That is provided with villi and microvilli. As we saw in the diagram, this layer is the mucosa layer, and this one is the villi, and above villi this projection this microfibrils like projection, these are known as microvilli, okay? और ये microvilli और villi क्यों प्रेजेंट होते हैं? To increase the surface area of a small intestine for better absorption of nutrients, ताकि ये surface area को बढ़ा पाएँ small intestine में, जो कि nutrients का absorption ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए small intestine में, okay? Next, these are the villi, and above villi microvilli are present, and villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called lacteal, okay? These are lacteal. These capillaries and large lymph vessels these are lacteal, okay? Now we will discuss about parts of small intestine. There are 3 parts of small intestine. First one is duodenum, second one is jejunum, third one is ileum, okay? The first one, duodenum. This is the proximal part, okay? This region is the duodenum region. This is proximal part.
it is 25 centimeter long. Okay. Next, it is connected with stomach and form U-shaped loop before leading to jejunum. Look here, this one is the stomach, this one is stomach. Okay, now stomach is connected to duodenum. Okay, this duodenum is U-shaped. After that, this duodenum connected with jejunum region. Okay, and inside this C-shaped loop, pancreas is present. Okay, and this pancreas is a heterocrine gland. We will discuss this about pancreas in next lecture. Okay, now we will see jejunum. Jejunum is the middle part. It is about 1 meter long and about 4 centimeter thick. Wall of jejunum is thicker and more vascular. Okay, this one is important. And after that, villi are thicker and tongue like. जो विलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, टंग लाइक होते हैं. प्लीका बेस्ट डेवलप. दिस प्लीका मीन्स फोल्डिंग, जो कि जो रीज होता है वो इसमें बेस्ट डेवलप होता है. ओके, पेयर्स पैचेज आर लैकिंग. जो पेयर्स पैचेज होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं. पेयर्स पैचेज ये लिम्फ जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स इसमें एब्सेंट होते हैं जेजुनम रीजन में. नो थर्ड वन इज द इलियम. इलियम इज द posterior part. Okay, this region is the ileum. This ileum connect with the large intestine. It is about 2 meter long and 3.5 centimeter wide. Okay, this ileum region is the longest region. The wall is thinner and less vascular. Okay, villi are thinner and finger like. इसमें था villi are thicker and tongue like. इसमें villi are thinner and finger like. And plica less develop and pairs patches are present. Okay, इसमें lymph nodules present होते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा ये डियोडिनम रीजन हो गया, फिर ये हमारा जेजुनम रीजन हो गया, फिर ये हमारा इलियम रीजन हो गया. 3 रीजन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का. नाउ वी विल सी द ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. 3 ग्लैंड्स है, बर्नर्स ग्लैंड्स, पेयर्स पैचेस और क्रेप्स ऑफ लिम्बरकुम. तो फर्स्ट है बर्नर्स ग्लैंड, फाउंड इन डियोडिनम ओनली. दीज आर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज म्यूकस ग्लैंड. ओके, these glands are important. You have to remember these glands. Now the second one is the Peyer's patches. These are lymph nodules. Okay, they produce lymphocytes. We all know what is lymphocytes. Lymphocytes are phagocytic in nature which destroy harmful bacteria. Okay, जो बैक्टीरिया होते हैं इनको ये क्या करते हैं, इनगल्फ करके किल करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं. हमारे इंटेस्टाइन में तो बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. तो हार्मफुल बैक्टीरिया को ये इनगल्फ करके किल करते हैं, लिम्फोसाइट्स. ओके, नाउ थर्ड वन इज द क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकुम, ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ओके, फाउंड इन डियोडिनम एंड इलियम. This is important. You have to remember this. Berners gland is only present in duodenum and crypts of Limbercone is present in duodenum and ileum both. Okay, this secrete succus intricus, that is intestinal juice. Okay, formed by folding of lamina propria. Now we will see the function of small intestine. तो सबसे मेन फंक्शन तो हमको सबको पता है. द मेन फंक्शन इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेजर फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और जो फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन में उनमें से जो बचे कुछ सॉल्ट्स विटामिन्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और मेजर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, एंड सेकेंड वन इज द secretion of hormone choleocytokinin CCK and secretin, and third one is the protection from harmful bacteria. Okay,
ये क्वेश्चन मैंने डाला है, द फंक्शन ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन इज, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ फूड, कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ फूड। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, थैंक यू सो मच and like this video if you enjoy it, and share this video in your group so more students can get benefit of this, and please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you so much.